My dear students, we have been discussing about the nucleus and its ultrastructure, and we have discussed about the first component, that's nuclear envelope. Now the functions of the nuclear envelope. First function of nuclear envelope is that it helps in nucleocytoplasmic exchange. So the first function of this is nucleocytoplasmic exchange. जो न्यूक्लियर एनवेलप की फंक्शन इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होता है, पहले कैसे होता है? थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय ब्लैबिंग. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स बाय इवेजिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर membrane and was first reported in salivary gland nuclei of Drosophila by Gay, 1956. So what actually is this blabbing? Is this formation of vesicles. When something big has to be transported in and out of the cell, simple diffusion or facilitate or active transport like through the permeases or carrion proteins and channel proteins is not so successful there. So in order to transport big things, vesicular transport takes place. Vesicles are circular spherical bodies which are loaded with certain things like proteins and something else. तो ये वेसिकल्स जो होते हैं बड़े गोल गोल होते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है. तो वेसिकल्स इवेजिनेशन होती है, इनकी मेम्ब्रेन के वेसिकल्स बन जाते हैं, फिर कट जाते हैं और उसके बाद साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वो चीज़ें जो न्यूक्लियस में बनते हैं. तो ये पहले देखा था ब्लैबिंग जो देखी थी गई थी. इट वाज फर्स्ट सीन इन ड्रोसोफिला बाय गे 1956. ठीक है. उसके बाद इसमें जो है डिफेंस और एक जो इसका रोल है, इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की और एक फंक्शन जो है डिफेंस, बिकॉज इट सेपरेट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द cell from the cytoplasm, so protects the DNA from the mutagenic effects of cytoplasmic enzymes. तो इससे क्या होता है, डिफेंस में कैसी रोल प्ले करता है? ये एक्चुअली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से, बिकॉज व्हेन इट फॉर्म्स अ वॉल अराउंड द डीएनए, which is a vital component of the cell, and it is surrounded by the nuclear envelope, which is bilayered, and then this nuclear envelope just protects the DNA from the cytoplasm, where certain mutagenic effects could have been taking place by the cytoplasmic enzymes, because there are enzymes which can just mutate the DNA. So to prevent these mutagenic effects of the cytoplasmic enzymes, the DNA is wrapped around by an envelope, that's nuclear membrane. That's what it helps us in the defense. It protects the DNA from harmful enzymic effects or something bad effects from the cytoplasmic content. And the third function of this is that it is microtubule organizing center. So actually when we will be discussing about the cell cycle, you will come to know about the microtubule organizing centers. Microtubules are these tube-like structures which are formed during the cell division, and they are just involved in just separating the chromosomes to their respective opposite poles, and they are made up of tubulin proteins. So this helps us in, we can say, in cell division also. So another function is their protein synthesis. So the nuclear membrane or karyotheca or leucolemma, which has many roles to play. It helps us in nucleocytoplasmic exchange of the materials by blabbing, and it helps us in defense, it helps us in microtubule organizing centers, and it helps us in the protein synthesis. So this was about the function of the nuclear envelope. Now we will come to know about the nucleolus. Nucleolus, actually this is the second component of the nucleus. चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें हमने 4 कंपोनेंट्स बताए हैं. न्यूक्लियर एनवेलप पहला हमने पढ़ा, और सेकंड कंपोनेंट जो उसका है वो है न्यूक्लियोलस.
न्यूक्लियोलस को लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं, इट्स लिटिल न्यूक्लियस, आल्सो कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस। तो इसको पहले ऑब्जर्व किया था फॉन्टेना ने इन 1781 इन द सिकिन सेल्स ऑफ ईल। तो फॉन्टेना ने इसको पहले देखा था जो ईल होती है, एक मछली है, एंगुला एंगुला जिसको बोलते हैं, एक फ्रेश एक ईल जो होती है, इसको इलेक्ट्रिक ईल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स इलेक्ट्रिकस व्हिच गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। तो ईल जो है एंगुला एंगुला, उसकी स्किन सेल्स में पाया गया था पहले ये लिटिल न्यूक्लियस, एंड दैट वाज गिवन बाय फॉन्टेना। तो देखा था पहले फॉन्टेना। तो ये टर्म न्यूक्लियोलस जो है इसको कॉइन किया था बाउमन ने इन 1840। तो बाउमन वाज द फर्स्ट हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियोलस, दैट इज लिटिल न्यूक्लियस। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था डी रॉबर्ट्स इटाल ने। तो पहली बार इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसको पहला देखा था डी रॉबर्ट्स ने इन 1971 इन इटाल। व्हेन इट कम्स टू, देखिए यहाँ पे इटाल लिखा है, डी रॉबर्ट्स इटाल। इटाल का मतलब हो गया, इट मीन्स दैट देयर आर कोवर्कर्स, देयर आर many other colleagues, scientists or researchers which are working with this leading scientists, and ital means co-workers or co-researchers, many other scientists which are involved in its ultra structure. So whenever there is ital, it means there are many other co-workers. So this nucleolus, its ultra structure was given by D. Roberts et al. Then after we will study about its position in